छोटे जो इनवॉइसेस है, नेटवर्क सर्टिफिकेशन बोलो या फिर छोटे जो इनवॉइसेस है, वो आपके मिस हो जाते हैं और आपका रेवेन्यू लॉस होता है उसमें। यहाँ पे कैसा होगा, आपने उसको बिलेबल किया है, जिससे भी कोई भी स्टाफ उसको कंप्लीट करेगा तो आपका तुरंत इनवॉइस जनरेट हो जाएगा वो बात का भी, नेटवर्क सर्टिफिकेशन या फिर कोई भी छोटे टास्क का मतलब बोलो आप। ठीक है। थर्ड, लैक ऑफ फॉलोअप्स टू कलेक्ट पेमेंट। आप काफी बार फॉलोअप्स भी नहीं कर पाते हो पेमेंट कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फॉलोअप हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये हाई लेवल व्यू है, ये डायग्राम आपको आइडिया दे देगा। लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ मैनुअल आपको क्या करना है कि सपोज मैंने जनवरी जीएसटीआर 2023 की जीएसटीआर 3B की चेकलिस्ट बनाई और उसके बाद ये पार्ट जो है वो पूरा ऑटोमेशन है आपका, ये पार्ट आपका पूरा ऑटोमेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी मंथ वो ऑटोमेटिक चेकलिस्ट क्रिएट करेगा, उसके बाद वो इनवॉइसिंग मॉड्यूल को दे देगा और आपको ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो काफी हद तक हमने ये ऑटोमेशन दिया हुआ है इसमें। ऑलराइट, तो हम अभी डेमो पर जाते हैं। अभी सबसे पहले आपको लॉगिन होने पर आपको ये स्क्रीन दिखेगा, लॉगिन होने पर ये स्क्रीन दिखेगा और ये काफी इजी टू यूज है। जैसे लेफ्ट साइड में आपके सब कुछ नेविगेशन पैनल्स है और सिंपल है, आपको वर्क आइटम्स है, रिपोर्ट्स है, मेंबर्स, लेबल्स, क्लाइंट्स एंड सेटिंग्स। ओके, वर्क में आपके ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब्स है आपका वर्क। ठीक है, वर्क में आपके ये सभी वर्क आइटम्स आपको दिखेंगे और ये आप फिल्टर कर सकते हो आपके सर्विस के हिसाब से, जैसे जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी आप है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे जो नंबर दिखाएगा वो नंबर दिखाएगा आपको आपका स्टेटस क्या है। जैसे 18 पेंडिंग है और आप उस पर होवर करोगे तो रिटर्न टू बी फाइल्ड कितने हैं, रिकॉर्ड नॉट रिसीव्ड कितने हैं, वो आपको एक क्लियर कट बर्ड आई व्यू दे देगा, आपको आइडिया दे देगा कि आपका स्टेटस क्या है। ओके, ऑलराइट, तो ये इसके बारे में हो गया। अभी हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में आपको ये पूरा नेविगेशन और ये आपके सभी मंथ जो भी चेकलिस्ट है आपके वो दिखेगी। जैसे सीजन बाय चांस रेस्टोरेंट एंड पार्टी हॉल, ये मार्च 2023 का आपका ये है टास्क है। ठीक है, और इसमें हमने डिटेल चेकलिस्ट भी दी है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। और इसमें हमने टास्क डिटेल्स भी दिए हुए हैं कि आपको इसमें क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। ये प्रोबेबली जीएसटीआर 3B में इतना यूज नहीं होगा, लेकिन जब ऑडिट करते हैं तो आपके टीम मेंबर्स को पता नहीं रहता कि हम ऑडिट में क्या करते हैं, तो इसमें उनको रेफरेंस के लिए कुछ तो एक नॉलेज बेस मिल जाएगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक चेकलिस्ट क्रिएट करता हूँ, इसको मैं मूव करता हूँ पहले। और यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीटेड का भी फिल्टर लगाया हुआ है, मुझे वो कंप्लीटेड चेकलिस्ट नहीं देखने हैं तो मैं फिल्टर करूंगा तो ये मुझे सिर्फ जो भी पेंडिंग है, अवेटिंग रिप्लाई है, वो सभी मुझे दिखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले एक चेकलिस्ट क्रिएट करता हूँ, टास्क क्रिएट करता हूँ मैं। ठीक है, जीएसटीआर 3B का टास्क। ओके, एंड द डमी कंपनी जनवरी से हम चेकलिस्ट टास्क क्रिएट करेंगे और उसको हम बिलेबल करेंगे। क्या 6000 पर क्वार्टर में इसको रखता हूँ, मुझे इसको 6000 क्वार्टरली मुझे बिल रेज करना है जीएसटीआर 3B का। ठीक है, और इसको मैं क्रिएट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे मुझे सभी कंपनीज वो सभी टास्क क्रिएट हो जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी टास्क क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि जनवरी से उसका काम पेंडिंग है फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे आपको एक फॉलोअप टैग दिख रहा है, जो फॉलोअप आपको बताएगा कि ये आपका फॉलोअप है। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट रिसीव्ड लेवल आप देखोगे तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है और ये क्लाइंट को ईमेल चले गया। मतलब एवरी मंथ आपकी जैसे ही चेकलिस्ट क्रिएट होगी, ऑटोमेटिक क्लाइंट को ईमेल चले जाएगा और ऑन बिहाफ ऑफ यू इट विल फॉलो अप करेगा वो क्लाइंट के साथ। तो बाय डिफॉल्ट ये रिकॉर्ड नॉट रिसीव्ड का लेवल लग गया है,
और क्लाइंट को ईमेल चले गया है। अभी क्लाइंट के ईमेल पर हम जाएंगे, इसमें मेरा ही ईमेल आईडी डाला हुआ है मैंने फॉर डेमो पर्पस। यहाँ पे क्लाइंट को ईमेल आ गया होगा, ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सभी का ईमेल आ गया है। अभी मैं मार्च अप्रैल का मैं उसको भेजता हूँ, रिप्लाई करता हूँ क्लाइंट को। यहाँ पर अभी मैं रिप्लाई करूंगा क्लाइंट को, प्लीज फाइंड डॉक्यूमेंट अटैच्ड। ओके, अभी क्लाइंट को ईमेल आ जाएगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात, यहाँ पे ये इनबॉक्स है आपका। ये इनबॉक्स मतलब आपका जीमेल का इनबॉक्स है, जैसे जीमेल का ही इनबॉक्स है, लेकिन इसमें ये टास्क के साथ एसोसिएटेड है। जो भी मेल क्लाइंट रिप्लाई करेगा वो ऑटोमेटिक वही टास्क में चले जाएगा। अभी जैसे यहाँ से ईमेल गया हुआ है आपको, क्लाइंट को आपकी तरफ से एक ईमेल गया हुआ है उसको, राइट। अभी जब भी क्लाइंट रिप्लाई करेगा वो ईमेल को, यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटोमेटिक वो द डमी कंपनी है और GSTR 3 भी अप्रैल 23 का, उसको ऑटोमेटिक वो टास्क अटैच हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप फॉलो अप भी स्टॉप कर सकते हो। मतलब जैसे ही आपका ईमेल आया, आपका ईमेल के अंदर से ही आप फॉलो अप स्टॉप कर सकते हो। यहाँ से अभी मैं फॉलो अप स्टॉप कर दूंगा, सो दैट उसको क्लाइंट को आगे मेल नहीं जाएंगे। और जैसे ही मैं फॉलो अप स्टॉप करूंगा, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि रिकॉर्ड नॉट रिसीव्ड और अवेटिंग रिप्लाई था, वो लेवल हट गया। सॉरी, ये करंट फाइनेंशियल, यहाँ पे ये करंट फाइनेंशियल, यहाँ पे आप देखोगे अप्रैल 23 का वो लेवल आपका हट गया, रिकॉर्ड नॉट रिसीव का और इन प्रोसेस का। और वो यहाँ पर भी आपको ऑडिट ट्रेल में दिखेगा, आपका ऑडिट ट्रेल जो कम्युनिकेशन का है यहाँ पर भी आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे जब भी ईमेल आता है आपको तो ऑटोमेटिक वो उसमें चले जाता है। इसके बाद अभी GSTR 3 में आपका टीम काम करेगी और अगेन उसको टैक्स पेमेंट के लिए उसको फॉलो अप लेना रहेगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, टैक्स पेमेंट के लिए मैं फॉलो अप लेना है तो मैं कोई भी इनबॉक्स में या जीमेल में या ये इनबॉक्स में या फिर यहाँ से मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, सो दैट वो ईमेल आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने ईमेल ड्राफ्ट प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे GST पेमेंट, आप जो आपके जो ईमेल ड्राफ्ट है आप वहां पे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सो दैट उनको टाइप करने की जरूरत नहीं और आपका जो भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन है वो एक कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होगा। नहीं तो अभी क्या होता है कि कोई भी स्टाफ मेंबर अपने हिसाब से मेल करता है। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जो है क्लाइंट के साथ कंसिस्टेंट होगा, और मुझे कौन से ईमेल से करना है वो मैं बताऊंगा इसको। ओके, और द डमी कंपनी जिसको मुझे मेल करना है और कौन से टास्क के रिलेटेड मेल करना है वो मैं बताऊंगा इधर। अभी अप्रैल, यस सर, यहाँ पे मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ, टू एवरी 2 days, मैक्सिमम 3 times इसको मैं रिपीट कर सकता हूँ, सो दैट वो फॉलो अप लेगा। अगर आपको रिपीट नहीं करना है तो आप रिपीट भी नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन इससे आपका फॉलो अप होगा क्लाइंट के साथ। तो कोई भी ईमेल, जैसे आपको काफी बार एडहॉक क्वेरी रहती है क्लाइंट के साथ, आपके स्टाफ मेल करते हैं एक बार और बाद में रह ही जाता है, जब लगता है तभी याद आता है। इसमें आप कोई भी ईमेल आप उसको फॉलो अप क्रिएट कर सकते हो बाय क्लिकिंग जस्ट रिपीट एवरी टाइम, और यहाँ से आप सेंड कर दोगे उसको ईमेल। ठीक है, अभी जैसे ही मैं इसको ये ईमेल को सेंड करूंगा, अभी ये टैक्स पेमेंट का मेल मैंने सेंड किया हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे आप चेक करोगे तो टैक्स पेमेंट पेंडिंग का लेवल ऑटोमेटिक लग गया और चेकलिस्ट अवेटिंग रिप्लाई में चले गए। मतलब इसका मतलब आपका स्टेटस ऑटोमेटिक मेंटेन होता है, जिस हिसाब से वो मेल कर रहा है अकॉर्डिंगली वो स्टेटस अपडेट करेगा। ठीक है, आपको मैन्युअली स्टेटस अपडेट करने की जरूरत है, और आप यहाँ पे फिल्टर में टैक्स पेमेंट पेंडिंग वाले कितने हैं वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप टैक्स पेमेंट पेंडिंग का लेवल लगाओगे तो आपको टैक्स पेमेंट पेंडिंग के ही दिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्लाइंट को मेल आएगा, ये इधर ये क्लाइंट का ईमेल आईडी है, यहाँ पे क्लाइंट को टैक्स पेमेंट का मेल आया। ठीक है, और अभी क्लाइंट बोलेगा कि मैंने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, आई हैव
कि अभी मैं सेंड करूंगा ये मेल। अभी जैसे ही मैंने सेंड किया, इसका फायदा ये है कि आपका यहाँ पे ऑडिट ट्रेल भी ऑटोमेटिक मेंटेन हो रहा है। आप इधर चेक करोगे तो आपका पूरा ऑडिट ट्रेल, ये टास्क के रिलेटेड आपका क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा इधर। और यहाँ पे जब भी मेल आएगा, यहाँ पे अभी आएगा वो, यहाँ पे मेल आ गया। यहाँ पे आप चेक करोगे द डमी कंपनी GSTR 3B फॉर अप्रैल 23, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको फॉलोअप दिखेगा। आपको स्टॉप करना है जस्ट फॉलोअप, और जैसे ही आप फॉलोअप स्टॉप करोगे, यहाँ पे आपका टैक्स पेमेंट पेंडिंग का लेवल हट जाएगा और रिटर्न टू बी फाइल्ड का लेवल लग जाएगा और चेकलिस्ट इन प्रोसेस में चले जाएगी। इसका मतलब है आपका स्टेटस ऑटोमेटिक मेंटेन होता है। ठीक है, अभी लास्ट थिंग आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका इनवॉइसिंग कैसे जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं फिल्टर करूंगा। ये अभी ये करंट फाइनेंशियल ईयर का बाय डिफॉल्ट दिखाता है, मैं ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का देखना हो, क्योंकि वो जनवरी टू मार्च लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब जनवरी फरवरी मार्च, इसको मैंने सिस्टम को बताया था कि मुझे क्वार्टरली इसका बिल रेस करना है GSTR 3B का। ठीक है, अभी मैं ये क्या करूंगा, यहाँ पे इसके कंप्लीट करूंगा ये सभी चेकलिस्ट। ओके, ये चेकलिस्ट कंप्लीट की जनवरी की। माहिर भाई, हाँ थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, डेमो अगर शॉर्ट में हो तो अच्छी बात होगी। या बस ये लास्ट है, ये लास्ट पार्ट है सर, इनवॉइस जनरेशन। थैंक यू। फेब का चेकलिस्ट कंप्लीट किया, एंड लास्ट जब मार्च का चेकलिस्ट कंप्लीट करूंगा मैं। ओके, मैंने ये मार्च का चेकलिस्ट कंप्लीट किया। यहाँ पे आपका इनवॉइस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अब इनवॉइसेस में जाओगे, ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो द डर्मी कंपनी GSTR 3B फॉर जनवरी टू मार्च 23, और यहाँ पे आपका जो भी है टैक्स टैक्सेस ऑटोमेटिक लग जाएगा। आपको सिर्फ एक बार रिव्यू करना है चेकलिस्ट बराबर सॉरी, इनवॉइस आपका बराबर जनरेट हुआ है या नहीं, और अगर हो गया है तो आपको सिर्फ इसको सेंड कर देना है। यहीं से आपको, यहाँ से आप सेंड करोगे, सेंड। अगर आपको प्रोफॉर्मा इनवॉइस सेंड करना, आप प्रोफॉर्मा इनवॉइस सेंड करो, या फिर टैक्स इनवॉइस सेंड करना है, टैक्स इनवॉइस सेंड करो। मैं अगर सेंड टैक्स इनवॉइस करता हूँ, यही से सेंड टैक्स इनवॉइस करूंगा, और यहाँ पे प्रीवियस ड्राफ्ट था, ये ऑटोमेटिक ये सेंड हो जाएगा। अभी जब भी क्लाइंट अभी ये क्लाइंट को ईमेल चले गया होगा कि इनवॉइस आया है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस आ गया है। अभी ये क्लाइंट ये इनवॉइस को व्यू करेगा, और ये ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स भी जाएंगे क्लाइंट को, जैसे आपने सेट किया होगा वो रिमाइंडर। यहाँ पे प्रोफॉर्मा इनवॉइस में आपको उसका क्लाइंट को उसको इनवॉइस दिखेगा, और उसके पास्ट इनवॉइसेस भी दिखेंगे, जो भी जिसका ड्यू इनवॉइसेस है वो सभी दिखेंगे। ठीक है, पेंडिंग इनवॉइसेस, यहाँ पे जैसे ही उसने क्लाइंट के इनवॉइस को देखा, यहाँ पे स्टेटस व्यूड हो जाएगा इनवॉइस का। ये देखिए व्यूड हो गया, और अगर वो डाउनलोड करेगा तो डाउनलोडेड हो जाएगा। अभी जब भी क्लाइंट पेमेंट करेगा तो आपको क्या करना है, ऐड पेमेंट करना है, पेड इन फुल करना है। ठीक है, और आपको चाहे तो आप उसको पेमेंट रिसिप्ट भी भेज सकते हो यहाँ से। तो मैं इसको पेमेंट रिसिप्ट भेज दूंगा और सेव कर दूंगा, सो दैट वो पेड हो जाएगा। ठीक है, तो और लास्ट लास्ट थिंग, यहाँ पे जो भी टास्क है आपके, मतलब ये इनवॉइस भी टास्क के साथ एसोसिएटेड है, उसकी वजह से यहाँ पे जो भी आपके टास्क है, आप यहाँ पे फिल्टर करोगे तो टास्क में इनवॉइस का स्टेटस दिखेगा आपको। मैं अगर कंप्लीटेड चेकलिस्ट देखता हूँ, तो यहाँ पे आपको टास्क में इनवॉइस का स्टेटस दिखेगा, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे आपको समझेगा कि ये पेड हो चुके हैं ऐसा, ये इनवॉइसेस। तो इस तरह से आपका पूरा ऑटोमेटेड हो जाता है, मतलब आपके क्लाइंट के ईमेल्स का जो फॉलोअप है वो ऑटोमेटेड हो जाता है। एवरी मंथ ऑटोमेटिक वो टास्क क्रिएट करता है, एवरी मंथ वो क्लाइंट के साथ फॉलोअप लेता है, और जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है तो आपका इनवॉइस भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। लास्टली आपके जो छोटे मोटे जो इनवॉइसेस है, अभी जैसे क्लाइंट काफी बार मेल भेजता है आपको कि मुझे नेटवर्क सर्टिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्लाइंट ने मुझे भेजा हुआ प्लीज इश्यू नेटवर्क सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ईमेल से ही मैं चेक टास्क क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्रिएट चेकलिस्ट करूंगा मैं, और यहाँ पे टेम्पलेट में डालूंगा टू डू। और यहाँ पे कंपनी डालूंगा द डमी कंपनी। ओके, और इसको मैं नेटवर्क सर्टिफिकेशन दूंगा।
और इसको मैं बिलेबल कर दूंगा, मुझे इसको 2000 चार्ज करना है नेटवर्क सर्टिफिकेशन का। तो आपका द डमी कंपनी का इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप टू डू में जब जाओगे और किसको असाइन करना है उसको आप असाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जब टू डू में जाओगे तो आपका नेटवर्क सर्टिफिकेशन क्या दिखेगा यहाँ पे, द डमी कंपनी का। ये बाय डिफॉल्ट ये फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, बट बेसिकली आपको ये यहाँ पे दिखेगा नेटवर्क सर्टिफिकेशन। और आप जब जैसे ही कंप्लीट करोगे आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। दैट्स इट। तो आपका काफी हद तक ऑटोमेशन हो जाता है इसमें। तो एनी क्वेश्चंस फॉर यू, फॉर मी? यहाँ पे आपका Thank ये you, नेटवर्क Mayur सर्टिफिकेशन। bhai. हाँ Please share your contact details in the chat box. जो या भी जिसको भी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है या या और भी कुछ देखना है तो उसके बारे में वो आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ये मोबाइल फ्रेंडली है क्या? ऐसे कोई चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है उसमें क्वेश्चन ले लेते मोबाइल फ्रेंडली अभी तक नहीं है, बट वी विल बी लाइक मेकिंग इट मोबाइल फ्रेंडली वेरी सून। हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच महावीर जी एंड ऑल्सो ऋषभ जैन for giving us a brief idea of about this practice management software. Thank you, sir. Yes. Now, क्या कॉस्ट क्या है इसकी, इस सॉफ्टवेयर की? कॉस्ट 2000 पर यूजर पर ईयर, लेकिन जेसीएफ के लिए हम 1500 पर यूजर पर ईयर रखेंगे। मिनिमम 5 यूजर्स को आपको चार्ज करेंगे। और इनवॉइसिंग का 4000 पर ईयर है, तो जेसीएफ के लिए 3000 पर ईयर रहेगा। ये अलग अलग मॉड्यूलर है क्या? अलग अलग हाँ मॉड्यूल मॉड्यूलर है। आपको सिर्फ इनवॉइसिंग का लेना तो आप इनवॉइस भी ले सकते हो। ओके, हाँ, या फिर आपको सिर्फ इसका ही लेना है तो आप ये भी ले सकते हो, वर्क मैनेजमेंट। ठीक। बट एक अलग ही सेशन रखना पड़ेगा हमें इन डेप्थ देखने के लिए। या बिकॉज मैंने अभी काफी फास्ट किया सब कुछ। यस, हाँ सर्टेनली। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। चलिए, with this now it's time to get to the audit trail concept, जो edit log का जो provision आया है नया with effect from 1st April 2023, जो सभी companies के लिए whether private public irrespective of the turnover सभी को जो applicable कर दिया है, तो उसके बारे में enlighten करने के लिए और उसको कैसे implement करें in our with the client's business, तो इसके बारे में बताने के लिए we have Punit Mehta ji. He is a treasurer of Mumbai JCF and a learned faculty और experience person बोल सकते हैं कि इस डोमेन में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं उसमें से बहुत कम लोग हैं कि जो ऐसे ऑफबिट एरिया चूज करते हैं। और पुनीत भाई उनमें से एक है कि जिन्होंने सीए होने के बावजूद ये सॉफ्टवेयर या टैली या इसके रिलेटेड जो बिजनेस सॉफ्टवेयर है इसमें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो with this brief introduction, because Punit bhai doesn't need any introduction, the entire JCF family knows him very well, and so I request Punit bhai to start with the topic. Thank you. Thank you, Mahavir bhai. Audible? Yes, yes. Oh. Respected Santosh bhai, GCF Pune President, CA Mahavir bhai, GCF Pune Secretary sir, Piyush bhai Chhajed, our honorable Central Council member and a very deep friend of GCF or rather member of GCF. We are proud of him. So, and all the other members, friends, good morning, Jai Jinendra, and welcome to our session, second session of the day of GCF Pune, which they have been doing it every Wednesday. I must congratulate both Santosh bhai and Mahavir bhai and the entire Pune GCF team to take the knowledge sessions on a rigorous basis and a disciplined basis every Wednesday. I mean, to do it once or twice or thrice is fine, but to do it for so long and on a continuous basis, whether there was COVID or whether there was no COVID, I don't know, in a year, might be 1 or 2 sessions might have missed, but otherwise I'm sure that every Wednesday, one thing is for sure, that JCF Pune knowledge session is there. And so good of you, I mean, to do it on a disciplined basis.
I must congratulate and please have a round of applause for GCF Pune itself. सर जी ये टीम वर्क है और सस्टेनेबल Yes. बेस पे हमारे बहुत से सीनियर्स भी है, मेंटर्स भी है, पिलर्स भी है कि जिनकी वजह से चल रहा है. थैंक यू And फॉर of course, अप्रिसिएशन. the support from JCF Apex वो and तो सवाल ही नहीं. strong pillars like you and Piyush Bhai. Even Amrit Bhai is there. Amrit Porwal Yes. ji is Yes. attending today's session. Thank you so much, all guys. Right, sir. I'll share the screen right now. Yeah. So edit log or audit trail in TallyPrime. We'll start our session. And Mahir bhai, last time when we had done a session, we had a lot of questions, if you recall. I think Mahir bhai the, Santosh bhai aap the shayad. Yes, I had attended that particular session. So this time also to make the session interactive, I'm starting the entire session with some questions only and would like members to reply in the chat so that we all are on one page before I start the actual sessions. Okay. So the first question goes like this. Access to books of accounts, those maintaining in electronic mode, should be available during the office hours at all times. No such specific reference. First, second, or third? Second. Okay. What about others? Please reply in the chat. First, Hitesh bhai says first. Okay. Sani says first. Jitesh Jain. Okay. Many says, Piyush bhai says second. Okay. I'll come to this answer a little while later. Now, backup, as you know, is an important part of business continuity plan. As you know, it is an important part of your organization. Backup of books of accounts and other relevant papers in electronic mode, which we are maintaining in electronic mode, can be anywhere in the world, only in India, for the companies registered in India. What is it? Can you maintain backup on an Amazon server, which is in US? Can you maintain a backup, which is a Dubai company? Can you maintain that? First or second? Second. Ketan bhai says second, right? Okay. That's nice. Here I'm finding a lot of clarity of thoughts. When should this backup be? On a regular mode, when should this backup be? Should it be on monthly basis, daily basis, or any period that management deem fit, or no such requirement? When should this backup of electronic data be? Again, oh, I'm sorry. Yep. Santosh bhai says 4. No such requirement. Okay, we'll come on that. Mitul bhai says 3. Mitul bhai, I got, I saw the thank you that you had received it the other day on GCF Pune. What about others? There are 30 participants. Kahan hai answer, sir? Preservation of audit trail is required for 15 days, 8 years from the end of financial year, forever, or only till the audit is complete. When you have to preserve, till when you have to preserve the audit trail? 3, 3, 3, 2, 2, 2. Good. Jitesh bhai, 8 is not there.
ये अभी तक आपके पास कोई ऑप्शन है 8 का? Sailesh bhai says 2. Yes. Okay. I'll come on an answer on this also. So auditor is expected to check whether the audit trail is enabled for such transactions, which results in change in books of accounts. What data was changed, who has made these changes, and when. That the audit trail has been preserved from 1/4/21, A or B, or A, B, and C only. What you wish, what you think that answer should be? A, B, C, D, E. Abhi numbers mat dalna. Okay, Jitesh bhai, I got it. 3. The next question. Santosh bhai says E. Ketan bhai says D. Okay. What about others? Rishabh says E. D. Okay. Almost all of them are D. Some are on E. It is not from 1/4/21. It is D only. I'll give answers for this also a little while later. Okay. Friends, the reason for taking up this session with that is that amendment in Rule 3, which is applicable from last year. What I have been seeing in a lot of webinars and seminars which I have been attending, mostly people are focusing on the MCA circular which has come last year in the month of March, that audit would be applicable, audit trail would be applicable. But more than audit trail, there are some other amendments also which has probably missed a lot of accountants' perspective. One thing is that availability of books of accounts should be available at all times. Earlier, no such reference was there in the rules. Okay. Earlier, people preferred, or one could infer according to their own wishes that what was there. But now MCA is very clear that the availability of books of accounts should be available at all times in India. Okay. The server has to be accessible in India. One thing. Second thing, of maintaining of backups. While backups are important part of business continuity plan, no doubt about it, and this is required, but what has been made mandatory is that companies have to maintain backup on a daily basis. Earlier it was mentioned just periodic basis. You have to check whether the backups are there on a daily basis or not. Okay. And whether the servers are located in India or not. So this is a primary requirement. This is not something that, okay, daily basis hai, nahi hai, periodic basis hai, chota company hai, chal jayega. All these things are not there. The rule says that the daily backup has to be there. It is mandatory for us to follow or give compliance of this particular amendment, or which has come on last year, 11th August 2022. Okay. And the further requirement was also there when the server is outside India, or not in India, but outside company. Okay. So you need to provide the name of the service provider, the IP address of the service providers, where the books are maintained on cloud, such address of the service provider. Okay. Details of where the service provider is located and the name and the address of the person in control of books of accounts. Now, this is a mandatory requirement. This is not the requirement of the, like, okay, karna hai. You need to report this to the ROC. Okay. So, ye aapko ek, you need to have this in your working paper. If the users are having data on cloud, if the users are having data on a server which is not in their own premises, of course it has to be in India. So these are the details which you will have to report it.
Yeah, Mahavir sir, cloud backup is compulsory. No, cloud backup is not compulsory. I'm sorry. The backup of data is compulsory. It's not necessary that it has to go on cloud. No, backup of data on a daily basis is compulsory. If you are maintaining on cloud, is good. If you are not maintaining on cloud, that's fine. Let's move forward. So, TallyPrime edit log. Further flow of discussion today, basics of MCA requirement, who, what, when, what are the MCA requirement exactly says, TallyPrime edit log walkthrough, which our main aim of the agenda or the session of these things. Prerequisites before updating the software, that we will go through that. Common questions, and some could come from the users itself, and Q&A and the way forward. What is it that is expected from the auditors? Any questions till now? I'm sure all of us have already gone through this Ministry of Corporate Affairs notification, which was earlier dated March 24, 2021. Out of the blue, the MCA came out with a requirement that each company has to maintain if they are maintaining the data electronically, then they have to maintain an audit trail. In their wisdom, they postponed it to 2022. Along with most of the users and chartered accountants and the professionals, accountants and otherwise, everyone was in a fix. What and how this audit trail is expected to be, nobody knew. And in their wisdom, they put it on 2022. Okay. And from 2022, they again put it to 2023, from 1st April 2023. What is expected is audit trail of each and every transaction. The software should have an edit log for each change made in books of accounts, along with the date when such changes were made. Mind you, changes include creation, addition, and deletion of record, ensuring that the audit trail cannot be disabled. The trail of the software or the trail within the software should not be such left to the whims of the users that they can disable the trail. As I mentioned, the MCA had announced that the amendments will take effect from 1st April 2023. Thus, the audit trail feature has not been tampered with, and the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirement of record retention, which I understand it is 8 years after the end of the financial years. Okay. So you have to retain the audit trail of the software, not only the books of accounts, but the audit trail of the software for the period of 8 years, minimum 8 years. That is very much required. So server backup in case of disaster, I did not understand. We'll come on that, Ketan bhai, little later. So no such global reporting requirement is there. And when there is no such global requirement, auditors have to exercise their professional judgment while reporting such matters. We are thankful that Institute has come out with a detailed guidance note on the implication of the this particular notification and what the auditor is expected to report when such edit log is maintained throughout the year,
when such audit log or audit trail is maintained only partially, or when such audit trail is not there in the software. So one must go through the, I would recommend all our fellow members to go through the implementation guide in detail, because this is exhaustively mentioned that when you have to check, what you have to take, and after checking, what you have to report it. While there is no such format of the audit trail which has been mentioned by MCA or by institute, but the reporting requirement has been clarified, or at least a detailed guidance have been provided by our institute. So which I think Mahavir Bhai had also shared it amongst the community of JCF Pune and otherwise and in the groups. So if one is not there, do let us know, me or Mahavir Bhai. We will forward that implementation guide of institute provided by CA Institute. Okay, so this is something which one must follow. Yep. So now coming to TallyPrime. TallyPrime edit log. Now Tally has got two versions of the software, current usage software. One is TallyPrime and normal, and one is TallyPrime edit log. May I know from the audience what they are using it for, the private limited company currently in their working? Are they using Tally for private limited companies? Have they started using TallyPrime edit log, or we are still in Tally ERP 9, or we have been using only TallyPrime normal? What are we using? Please respond back in chat. Amit Bhai says edit log. Jitesh Bhai has all the version, but for private limited company, Jitesh Bhai, what are you using? Mahavir Bhai is on edit log. Fantastic. Only 3 answers. What about the rest 25 people? Hital, I will come on that answer. That can we use TallyPrime with edit log activated? Pramod Bhai is using TallyPrime probably. Yes, I will come on that, Hitalji. Normal TallyPrime. Okay. Now let me just brief you. Is my Chrome sim screen also visible, Mahavir Bhai? Yes, Punit bhai, yes, it's visible. Yeah. So users can go here and download either of this TallyPrime 2.1 or TallyPrime 2.1 edit log. But for private limited companies, they have to download this only. There is no additional charge. You can directly download the TallyPrime edit log within this thing. And you can also see that your same license can be used for TallyPrime edit log itself. So no need of any new license to be purchased. You can use within the thing, within the current software setup only. Once you download the TallyPrime edit log, what will happen is that this particular icon on the desktop, or rather you will have TallyPrime and TallyPrime edit log. These are the two icons that you may have. And once you start TallyPrime edit log, it will ask for migration. Essentially, what it is doing in migration, it is ensuring that the audit trail is activated within the software. So if you see, there are options which are coming: Apex Electricals,
it migration required and some migration not required. Okay. So if I go and activate this, ask for this, it will ask for the user and password. And after checking that where the backup has to be maintained, it has activated. So Alt K is the first shortcut. You just have to remember 3 shortcuts. The first shortcut I'm saying is Alt K, edit log. It says that company data moved from TallyPrime on 3rd May, normal data to 3rd May. Earlier on 5th April, edit log had been enabled, but on 3rd May, it has been moved from normal TallyPrime to TallyPrime edit log. Okay. So the first shortcut is to check when the data was moved. So this is something really important. Tally allows us to use, or rather it is user's choice to use either Tally edit log or TallyPrime. For private limited companies, one has to use only and only edit log. Okay. And if in case you are maintaining using normal TallyPrime also and opening the company in normal TallyPrime, this will be noted in the software itself that the audit trail was not enabled for such and such period. Okay. So in this scenario, users has to note that there could be an adverse remark from the auditor that the edit log was not available for the entire year. The first shortcut was this, Alt K. After that, whenever you create a voucher, since most of you have already mentioned that they are using edit log, Hetal and Jitesh bhai, I'll come on the reporting part of yours little later. Okay. So when they are using, when we have to check that, okay, what there is a transaction and this transaction has been modified for 400 rupees to 300 rupees. For some reason, on 31st April 21, this transaction dated 31st April 21 has been modified on 3rd May 2023. How would you see it? By simply clicking on a shortcut key. The second shortcut key is Alt Q. Alt Q, which says that which was the previous record and when it has been altered. Okay. And yeah, Jitesh bhai, you would like to say something? हाँ पुनीत भाई, so how do I check as an auditor? Suppose I am checking the audit of a multinational company. They are maintaining in TallyPrime. How do I check that throughout the year how many edits have been made in the interest after the? I'll come on that. I'll come on that. We are currently doing transaction, individual transaction checking. Yes. Okay. Right. So if I want the total, I will come on that. I will come. That is what we all are waiting for. So the first check is Alt Q. The second shortcut I said is Alt Q. You just have to remember that in a transaction you have to click on Alt Q and to see when and what the modification was done. So when you click on Alt Q, you get that on 3rd May 9:39 morning, you get this particular changes, and when you click on enter, it gives you that. So if a transaction has been altered twice or thrice, this transaction is altered second time also. Again, I press on Alt Q. So you will find that
there is previous record, second record, username, and when they have made the changes. And you can just go in any of them and see what the changes was made. The changes are reflected in red color button, red color modification. So this is what it is. Once these changes are reflected for individual transaction, as Jitesh bhai rightly said, how do I know that what modifications has been done to which vouchers? So what modifications, for what modification you will have to click on Alt Q only as of now. Currently there is no other system, but we can have which vouchers has been modified. So you can click on daybook, display daybook. You can select the entire period 14 to 31/3, in this case 2021, and you can click on the third shortcut key, that is called Control B. Control B and show report for altered vouchers only. And after you select altered vouchers, include deleted vouchers, yes, and type of voucher entries, all vouchers. Okay, this is what it is. So third modification, third button is this. So you find that there is a transaction which has been deleted and there is a transaction which has been altered. Only two modifications are there, and then again you'll have to press Alt Q to see what that transaction was. So deletion had happened in between, after activation of edit log and after deactivation of edit log, and that's why that deletion, earlier information is not there in that particular transaction. But once the transaction is activated, suppose this edit log is there. So if I wish to delete, Alt D, I have deleted this transaction, and then I say Control B, all vouchers, altered vouchers, include deleted transaction. So here I will come to know that what was the transaction, 1,800 rupees transaction. When was the transaction deleted? 3rd May 9:43. So you get all the things, whether the transaction has been, when the transaction has been created, altered, deleted, who has done it. It comes with the name, because A is the login name which I am using it. It comes with the name, when they have done it, and what they have done it. So who, when, and what, all these three are answered by the edit log. Edit log software which is downloadable from Tally Solution site. Okay, now let me give check the chat box. One second. पुनीत भाई, Yes. एक था कि हमने बैकडेटेड एंट्री मारी है, कैन इट बी ट्रस्ट? फॉर एग्जांपल फर्स्ट पहले एंट्री थी इनिशियली 31 मार्च को, 1 अप्रैल में एंट्री मारी, कैन इट बी ट्रस्ट? Of course it will be. The entire purpose of the edit log is this only. So in this I have just shown altered of transaction. If I create a transaction, suppose I create a transaction which is in the year 2021. And you go to display daybook. This was the transaction which I have created. Alt Q, it shows that this was created on 3rd May 23. The back date of the transaction is 31st March 21. So as I said earlier, creation is also taken care when you are updating the software, or rather when you are working in edit log. It doesn't matter whether you are doing it for 2021 or 22-23. It doesn't matter. Edit log is maintained for each and every transaction. पुनीत भाई, Yes. एक्सटेंडिंग दिस क्वेरी, ऐसा था कि समझो आपने बताया कि आपने लास्ट ईयर में एंट्री की और 3rd मई को की, तो इसने पकड़ लिया. नाउ अभी समझो डे टू डे बेसिस पे कल की एंट्री आज कर रहे हैं,
वो भी एडिट लॉग में आएगा? Of course, it will. So precisely the government wants that only when you are doing the entries. The precise requirement from the government is this, that they want to know, or rather they want to get it recorded when you are doing it. So when, what and who, these are the three primary aspects of an audit trail. Whenever you are doing on a day-to-day basis, Jitesh bhai, I will take it further that, and this is one of the chat box question also, that what to do in case of small companies wherein the accounting is done once in a year. So in those cases also, if the accounts are required to be maintained on a regular basis, there is no such exception. Exceptions are there in other provisions of MCA of GST, but for this provision, there is no such provision that edit log is not applicable for small companies. It is applicable for all companies. So when it is applicable for all companies, the user will have to record the accounting date. It will get recorded rather when the accounting is happening. Whether to report or not to report. Mitul bhai, yes, optional vouchers, not many know. Created and later deleted without making it as a part of final entry. Whether it will be under edit log, any entry, whether it is optional or regular, would be there in the edit log. Even if it is just for a purpose of rough accounting or otherwise. Mitul bhai, optional entry is also being used for maybe gap purposes, reporting in gap, Indian gap and international gap, when you are creating a scenario. So for that purpose also, if you are maintaining tally and optional entries have been passed, the entire edit log or audit trail would be there for such software. Who, when and what would get recorded. पुनीत भाई, any exception कौन से एडिट लॉग में नहीं आएगी? Yes, Jitesh bhai. Any exception कौन से एंट्रीज एडिट लॉग में? There is no exceptions. I mean, government has not given any kind of exceptions, as I understand, whether it is for small companies or whether it is for any type of entries. Now, what when we are looking at an accounting software, now these are, the government has not defined, or rather it is not said audit trail is required for books of accounts. Now, books of accounts could include your inventory records, your basic accounting records, your petty cash book, bank book, journal records, everything it would include. Okay, so books of accounts includes each and everything. It doesn't give an exceptions. Yes, if you are maintaining some Excel sheets for maybe payroll calculation, that may not, which they not form part of your books of accounts. So if you are maintaining payroll in Excel and then passing the entry manually from that Excel to Tally, you need not have an audit trail for that. But in case you are maintaining a payroll software and the entries are flowing directly from there, then you will need to ensure whether the payroll software is having an audit trail or not, because then it would also form part of your books of accounts. Okay. So with that, I mean, there could be multiple exceptions, like somebody is using just POS invoice. Okay, POS invoicing के लिए एक software दूसरा use कर रहा है, and the data is directly flowing from that software to Tally. Okay, or to other software where the audit trail, accounting software, I'm not saying Tally only, for to the accounting software, then you will have to ensure that the edit trail or the audit log is available in that software also. Okay. पुनीत भाई, एक Yes. जो क्वेश्चन जो जितेश भाई ने भी जो पूछा था, वही कंसर्न है कि होता क्या है कि जो मान लो कि जैसे आप बोले कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है और उससे एट द एंड ऑफ द डे जो उसका डे ऑडिट जिसको बोलते हैं, उसके बाद में मे बी आफ्टर 12 o'clock इन द नाइट द एंटायर डाटा इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू टैली. अगर ये बैकडेटेड एंट्रीज का अगर इसको अगर पकड़ रहा है ऑडिट ट्रेल में, देन देयर द वॉल्यूम विल बी ट्रिमेंडस कि उसमें से कुछ फाइंड आउट ही नहीं होना है फिर बाद में. इस तरीके का सीन बन सकता है.
तो ओनली क्लैरिटी दैट वी नीड कि अगर मैं आज एंट्री कर रहा हूँ कल की, या मेरे पास बिल आ रहा है, बिल अगर मेरे 8 दिन पहले का बिल है, तो मैं इनवॉइस डेट को अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई शुड बी एबल टू रिकॉर्ड इट विदाउट एनी दिस ऑडिट ट्रेल एंड ऑल दिस कंसर्न्स unnecessary, because explaining the thing ki why you have recorded this transaction 2 days back or 3 days back, or why you deleted and edited, all these things are going to be havoc, particularly in the scene situation where the department is asking for this audit trail. I know it could be an havoc. As of now, the reporting requirement, Mahagribhai, as I understand, the auditor is only supposed to say whether the audit trail is available or not. There is no such requirement where the audit trail has been checked, what it has been checked, by how many times the transaction was modified. It is not there as a part of reporting requirement, but maybe as a part of regular audit procedures. If the government is expecting the auditor to check, that you go and check that when a transaction has been created 15 times, or rather altered 15 times, or created after 15 days, it is the question that the government might ask to the auditor at later point of time. But as far as current scenario is concerned, it is only the reporting which is required to be done. It is, the government is not saying as of now that there is no bar in entering the transaction after 3 days or after 7 days. There is no such bar. Okay, as of now, the requirement is that whether the audit trail is maintained, yes or not, and the reporting requirement related to it. It is for us as a member of the institute. It is for us as a member of the institute and our council members to represent and to clarify what to do in such scenarios where the users are doing it on a, I mean, once in a 15 days or once in a 7 day or once in a quarter, where there is no such monthly requirement from the user. Okay, so I'm not sure what and how that would be reported. That is for our institute to clarify further. I would leave it to that. पुनीत भाई, पुनीत भाई, मैं जो सोच रहा हूँ कि इससे हैरेसमेंट कितनी हो सकती है, क्योंकि हर एक स्टेक होल्डर को ये डेटा जाएगा, अगर समझो अपने ऑडिट ट्रेल का, तो उसके हिसाब से अगर 2 साल के बाद 3 साल के बाद वो लोग अपने को पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, दैट विल बी काइंड ऑफ वेरी मच न्यूसेंस फॉर अस. हो सकता है माने तो इसमें सब बातें स्ट्रीमलाइन होने के लिए टाइम लगेगा, बट सर्टेनली इट इज गोइंग टू मेक अ लाइफ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जस्ट अ काइंड ऑफ हेल. I agree. While this would increase transparency, while this would increase a lot of clarity in how the data is being maintained, but at the same time, it leaves it on harassment also. So I would not disagree with you on this particular scenario, that tomorrow MCA calls for edit log data after 3 years, and chartered accountant has not seen that the transaction was edited 5 times, because they were supposed to audit what is reported in the financial statements. So they have audited and their voucher is matching with what is reported in the financial statement. But for ensuring that matching is done, the transaction had been modified 3 times or 7 times or 10 times in the normal case of business also, and maybe some other activities. But is the auditor expected to check the number of times that audit is transaction has been modified? What is it, when that responsibility ends and when that responsibility starts? To my mind, it is a sort of a danger which is coming up in very shortly. पुनीत भाई, ये जो टैली डेट पकड़ता है, इसको कैसे मालूम पड़ता है कि कौन सा डेट चल रहा है आज और कौन सा बैक डेटेड है? हाउ डज इट गेट इट? आप जब टैली का लाइसेंस, आप जब टैली चालू करते हैं ना, हाँ, टैली का लाइसेंस एक्टिवेट होता है फर्स्ट टाइम, टैली का EXE एक्टिवेट होता है, और टैली का EXE जब एक्टिवेट होता है तो आप टैली आपका सिस्टम डेट चेक करता है, और लाइसेंस वो एक्टिव है कि नहीं है, या बेसिक लाइसेंस का वर्किंग उनके सॉफ्टवेयर से वर्किंग करता है. ओके, तो आपका जो सिस्टम डेट और टैली के वेबसाइट के ऊपर जो टैली का सिस्टम डेट है वो मैच करेगा तो ही आपका लाइसेंस चालू होगा. मैं टैली का टेक्निकल इंफॉर्मेशन है इसीलिए बता रहा हूँ. तो वो दोनों मैच करेंगे तो ही टैली का सिस्टम चालू होगा, अदरवाइज टैली का लाइसेंस ही चालू नहीं होगा या एजुकेशनल मोड में होगा. दैट इज वन.
एजुकेशनल मोड में आप खाली 1, 2 एंड 31 तीन ही डेट पे एंट्री कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, और नॉर्मल टाइम पर आपको लाइसेंस लगेगा ही लगेगा। और एडिट लॉग अगर है तो वो जो सिस्टम डेट है वो सिस्टम डेट के हिसाब से आपको टैली में रिकॉर्ड करा के देगा। पुनीत भाई, पैरेलल अकाउंटिंग हो सकता है? आई डिड नॉट गेट इट, पैरेलल अकाउंटिंग? मैंने तो दिखाने के साथ अलग और सही में जो है वो अलग। सर रिपोर्टिंग अपने पर है, गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट करना है वो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। इट इज दैट प्रोफेशनल जजमेंट दैट दे विल हैव टू से। Somebody said that what to do when the auditor or rather accountant has management has started the audit trail from 1st May or 15th April. It is simple. The auditor will have to report it that the audit trail was not available during the entire year. पुनीत भाई, Yes. just to extend your query, आपने बताया कि जैसे ऑडिट ट्रेल होना जरूरी है, राइट? Yes. नाउ पुराना जो टैली था उसमें भी एडिट लॉग था, बट उसमें एक ऑप्शन था यस और नो, राइट? हाँ, वो टीसीपी बेस पर था, टैली कस्टमाइजेशन बेस पर था। तो ये जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, उसके अंदर एक थर्ड लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, द एडिट ट्रेल शुड नॉट बी अलाउड टू बी डिसेबल्ड। अग्रीड। तो माय क्वेरी इज, मेरे पास पुराना टैली था अप टू 30th अप्रैल, अब मैंने 1 मई को टैली एडिट लॉग में वर्जन ट्रांसफर किया डेटा। नाउ मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि मेरा एडिट लॉग होना चाहिए, राइट? तो वहां पे एडिट लॉग तो था, इट वाज एडिटेबल और नॉन एडिटेबल। एडिट लॉग था लेकिन वो एडिटेबल था, तो वो होने के बावजूद वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है। आपको 1st मई को आप एडिट लॉग में आए तब आपको ये बिना ऑप्शन दिए कि आपको ये डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, बिना ऑप्शन दिया है तब जाके आप इसको बोलते हो कि भाई ये एडिट लॉग है। ये एडिट लॉग होने का मतलब ही है कि आप डिसेबल नहीं कर सकते हैं। सो इफ यू यूज इट इन अर्लियर दिस थिंग, इट इज ऑफ नो मीनिंग। सो आई वुड रिकमेंड दैट आपको, मतलब मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि आपको ये कमेंट रखना पड़ेगा कि अप टू 1st मई द एडिट लॉग वाज नॉट अवेलेबल, or it was not available in the requisite format, or which the users are not able to disable. Punit bhai, yes. Punit bhai, what I feel is instead of qualifying the reports, what we can do is we can start the edit log right now. जो भी अप्रैल के जो भी entries है, that we can enter as of today, and we can start even for small companies wherein we are doing one-time accounting. I don't feel there's any bar because we are here only for reporting whether edit log is maintained or not. So Yes. we have maintained the edit log. April month entries are done in the month of May. Not a bar for, not a qualification as an auditor. Yes, when it comes to if there is some problematic case and no, it's picked up for scrutiny and that point of time they ask, then it is only that we'll have to report, okay, this was the case and we have done entries for all the 30 days in after we have done late recording, but there's no bar as such and we are not here to report anything of that sort. So these kind of problems could be avoided. This is what I feel. Agreed, Amit bhai. I completely agree with you. There is no such bar, and to extend a little analogy that you have given of recording late, there is no bar of deletion of also of the transaction. So in case a transaction is deleted, there is many times that myth is there that transactions are not supposed to be deleted. No, the transactions can be deleted. But only thing is that now in edit log, it gets recorded what was the transaction which was there. Okay. Yes. I think Punit bhai, let's we have limited time. Let's focus on the this part. Okay. How to maintain this audit trail. We'll think about bypassing the all these things later on at later point of time. True. But अभी जो है focus अपना ये क्या होना चाहिए और कैसे रखना है इसके ऊपर रखते हैं थोड़ा सा. So friends, I have explained 3 shortcuts. One was Alt K, edit log, to see when the edit log was activated and how many times in case it has been deactivated. That was first. The second was Alt Q. Within the transaction, you check it and you see what was the modification which was done to the transaction. The third was Control B. Now, these are the 3 things that is there. Many times the question comes that my masters have been modified.
the PAN number has been updated, the address has been updated, or some other details of masters has been modified, or in this current scenario, you will be going ahead and updating the opening balances of the earlier year or the current year, whatever. So there could be many reasons for master modification. How to check that? Simple. Go to individual ledger master and suppose this is the modification. This is the modification which I have made in the ledger. Alt Q, the same second button, previous record and altered record. You have added an address. Okay. So you will get master modification also from this. Similar to our daybook requirement, that what was there in the entire list of masters. If you wish to see, we can go into chart of records, chart of accounts, ledger, and the second shortcut key, Control B, show report for altered ledgers, including deleted ledgers, Control A. Okay, so here in the chart of accounts, you will find only and only masters which has been altered. Okay, so these are the two things that one must note it for masters as well as for transaction. For masters, it is chart of accounts. For transactions, it is daybook. These are the two things one must note it. When we as an auditor are going to any particular when we as an auditor are going to auditee and doing an audit and just doing a Control A, okay, this transaction is fine, Control A. So if you see, this is also recorded, Alt Q. One second, Control A. Resaved, no changes. So first time it says yes, it could be altered because this was coming from the edit log, and the second time it is saying resaved, no changes. Okay, so one must note that if you have the login ID and the password, you please go and create your own password firstly and exclude yourself or your articles from the alteration of the masters and alteration of the transaction. Okay, so that you must ensure that is required when you are working in an edit log environment. Please ensure that your articles are not having an excess of alteration of transaction. Earlier it was not that much important, but now it is very much important because who has done it, when they have done it, what they have done it. Okay, so this is what is very important from the user's perspective. So Punit bhai, my query was, while doing audit, we should not use the, while checking the journal entries or any entries, we should not use Control A. Agreed. We should not have alteration rights itself. Okay. My suggestion is disallow, because कभी कभार Control A यूज हो जाएगा और कुछ भी रहेगा. Alteration rights डिसेबल करने के लिए एकदम सिंपल फॉर्मूला है. आप यहाँ पे यूजर्स एंड पासवर्ड में जाइए. अच्छा, इधर बहुत सारा है. पहले एक यूजर क्रिएट कीजिए, यूजर रोल्स. ओके, सपोज ऑडिटी. Auditor and disallow basic facility, disallow full access masters, accounting masters and inventory masters also select कर सकते हैं, और disallow full access of vouchers. And display print masters, display print vouchers. ये दो आप एक्सेस को ध्यान में रखिए आपके ऑडिटर को. ओके, ऑडिटर यूजर लेवल क्रिएट कर दिया है एंड फिर यूजर्स एंड पासवर्ड में
auditor Jitesh. Okay, I accept this. Let's check whether. So now if you see, only display print of masters are there. Alt enter and you can able to display it if they want to see the master. If they want to see the transaction, alt enter. That's it. They can get all the details. Alt enter, display print. आपको आपके articles को सारे users में आपको you have to ensure that the proper user security is enabled so that the blame game does not come on your head. Yes. Pranav, can the license holder be tracked? No, as of now, this particular thing is not required. या ये नहीं है कि आपने ये जो टेली का लाइसेंस है, in my case, it is F1 about. ये जो 701000181 में डेटा किया है या आपके ये डेटा को कॉपी करके आपके एडिट लॉग में किया है, करंटली वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि कौन से कंप्यूटर से किया है, who, when and what है, बट दैट रिक्वायरमेंट आई हैव नॉट सीन इट कि वो आईपी एड्रेस या उस कंप्यूटर का नाम या उसका लाइसेंस का डिटेल्स भी कैप्चर कर रहा है. नो, इट इज नॉट देयर करंटली, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट द गवर्नमेंट इज आस्किंग बिकॉज गवर्नमेंट हैज नॉट कम आउट विद अ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. कोई भी रिपोर्ट के लिए नहीं लेके आए हैं गवर्नमेंट कि दिस इज व्हाट इज सपोज्ड टू बी रिपोर्टेड इफ यू हैव सीन द मॉडिफिकेशन और दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एसेंशियल. Everyone is presuming from those two brief paragraphs which the government has issued in the notification. पुनीत भाई, Yep. जब हम ये दिस ऑटोमेटेड जो ट्रांजेक्शन इंपोर्ट होता है टैली में थ्रू एक्सेल और एनी अदर वेब पोर्टल, क्या उस पे भी एडिट लॉग ऑटोमेटिक एप्लीकेबल हो जाएगा कि नहीं? So if you consider that as your books of accounts, yes. Okay. Otherwise no. अगर वो आपके books of accounts का part है, if the entries are directly flowing from that software, Excel में अगर आपने रखा है और Excel से अपलोड कर रहे हैं, and if that Excel is not your books of accounts, then you may not treat that as it. But जब आप import करेंगे, तब यहाँ पे डे बुक में जब आप जाओगे, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा imported. Okay, that option would be there. The user, the tally edit log, जब अगर आप बॉट के थ्रू या टीसीपी कस्टमाइजेशन के थ्रू इंपोर्ट करते हैं, तो वो यूजर्स का ऑप्शन आ जाता है इंपोर्टेड. ओके, सो दैट इज देयर. Let me take you to the further requirement. Almost 10, 15, 10. Okay. Friends, 5 minutes, 5 to 10 minutes more. We've seen Tally Edit Log. What are the prerequisites? If the users are in earlier version of Tally ERP9, before moving, please ensure they have a 64-bit machine. Enable and activate security details as I've just shown you from the auditor's perspective, but for the user's perspective also. It is important that who is doing it, when it is doing it. Without security details, it will be hard for you to check who has done this entries modification. Check the data size. Now, because the
trail is required for each and every transaction when they have been modified, and if they have been modified 10 times, you have to ensure that the data size is enough, having hard disk space. Okay, agar aapka data size huge hai, so I would recommend to ensure that there is enough hard disk space and the RAM available. 60 ideally in an LAN environment, what we have seen is that 2 GB per user. So agar aapka 8 users hai, the server should have at least 16 GB RAM. So that is what ballpoint figures that we see whenever we are looking at कि data slow चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो we first say कि भाई RAM कितना available है. अगर आपका 4 GB RAM में आप 6 यूजर या 8 यूजर एक ही कंपनी में ऑपरेट कर रहे हैं, so then there might be some problem. So it is ideal that you should have enough RAM capacity on the server also, because TallyPrime takes huge amount of RAM also. The only change which happens from the user's perspective, of course, activating the audit log, is the change of voucher numbering. What edit log does is that it changes the number from normal numbers to manual auto numbering. So if you have automatic numbering or this thing, the voucher type, in voucher type, all the vouchers shift from automatic to manual auto numbering. Okay, this is the only change which happens, and for that one must be prepared that till yesterday I was having automatic numbering, now it is manual auto numbering. Manual auto numbering is a series where the numbers are coming automatically, but once they have been given, allocated, it does not get modified if you have inserted a transaction later on or created a transaction later on at a back date. Okay, तो उसको नया नंबर मिल जाएगा आपको, और जूना नंबर जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा. In automatic numbering, the entire number gets shifted. So that was the problem that many users were facing. So Tally is clear that in edit log, why to have a problem on a recurring basis for the numbering part. Ideally, because 22-23 का आपका ऑडिट नहीं हुआ होगा, तो भी आप पहले अगर आपने इसको स्प्लिट कर लेंगे, that would be nice. 22-23 you may continue if you wish in the normal TallyPrime, and 23-24 data would require in edit log for private limited companies or limited companies, and in that matter section 8 companies also. So there are some FAQs. No, the MCA clearly says accounting software should not have an option to disable it. So inbuilt capability, this is an inbuilt capability of TallyPrime edit log. Can the users compare the selected version? I have already seen this. Plus and minus करके वो आप दिखा सकते हैं. Alt Q करके जब आप versions check करते हैं, and in that you can click on plus and minus. Data size impact, we've already discussed. Yes, data size would get impacted for each and every modification. So please ensure enough hard disk space for your data. We have seen a modification of the masters. We have seen the reporting requirement also. This also Alt K first shortcut we have already seen. Will the data be compatible with the previous release? No. Will the audit log be retained when the company is split? Yes. This is an important question that on 15th of August you decide that 22-23 data complete हो गया है, अभी उसको split कर दूं from 1st April 23. Will the edit log in the new company which is started from 1st April 23 will be retained? Yes, it will be retained in both the companies. This also users are asking that can we delete the edit log completely record by record? Answer is obviously no. Those who are not under the preview of MCA can opt for edit log. If they wish, this we can take it a little later once we are into question and answer sessions from the chat box again. Will edit log associated with transactions? We have already discussed if they have been synchronized or imported. Import word आ जाएगा उन transactions के नीचे. What all information gets captured?
version history, that is ledger, ledger masters, ledger groups, stock items, created, altered, resaved, cancelled, optional, import, migrated, synced, split, repair. So in case a transaction has been repaired also, वो भी दिखेगा इसमें. Many times we do Control Alt R and repair करते हैं transaction को, तो वो भी दिखेगा. This has been done due to repair. Yes, जितेश भाई. पुनीत भाई, अगर नरेशन चेंज किया तो वो ट्रैक नहीं होता. हाँ. नरेशन चेंज किया हो तो This is also track. नरेशन क्या आप मास्टर का एड्रेस चेंज कर रहे थे वो भी ट्रैक किया है, वाउचर का नरेशन चेंज कर रहे हैं वो भी ट्रैक किया है. इनफैक्ट आप वाउचर में जाके आप F12 करके सपोज कुछ नोट्स ऐड कर रहे हैं वो भी ट्रैक हो जाएगा. आपका जीएसटी नंबर अपडेट हो रहा है तो वो भी ट्रैक हो जाएगा. सारी चीजें मास्टर की हो या ट्रांजैक्शन की, एवरीथिंग इज गेट ट्रैक. इट इज एज गुड एज अ कैमरा विच इज देयर इन योर अकाउंटिंग डेटा. Edit log is nothing short of a camera in your accounting data. Customization report be built on accessing. This is, they have said, yes, I'm not sure how this would be, but not much of the customization has come again. But उसमें edit log modify नहीं हो पाएगा. There might be some amount of customization which is there. So Tally allows browser or mobile reports also. Currently edit log उसमें नहीं दिखेगा. Edit log be backed up and restored. Yes, as we have seen, 8 years तक आपको रखना है. Friends, here also it is an important aspect that one must note that your reporting requirement or the auditor or accountant has to ensure that the data is available for 8 years. Many times we are using subscription based software, and in that, whether the edit trail is there or not, audit log is there or not, one must ensure that how would you keep in case the subscription is not available in a future period. So उसका भी एक आपके माइंड में बैकअप या उसके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई अगर मैंने इसको सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू नहीं किया तो हाउ एम आई सपोज टू कीप द एडिट लॉग रिक्वायरमेंट. ओके, सो एडिट लॉग डेटा हम लोग डिसेबल नॉर्मल टैली प्राइम में एडिट लॉग एक्टिवेट कर सकते हैं इन केस द यूजर फील that requirement is there. मैं बता सकता हूं, but let me take it to the last thing. Okay, flexibility to use TallyPrime edit log on normal TallyPrime है, ये एक हम लोग लास्ट में चाहिए तो ले लेंगे. Can the same data be allowed to access simultaneously between two different products? No, definitely no. Users cannot use the same data in edit log as well as TallyPrime. उसमें आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा either of that. And अगर आपने माइग्रेशन किया है, alt के मैंने फर्स्ट चीज बताई है that the user will have, the auditor will have to report that the data was not available for such and such period in the edit log mode or audit trail mode. Many users are now using TallyPrime on cloud, and especially the AWS which Tally company themselves have provided. Will it be available? The edit log version would be available on AWS. Yes, it is available on AWS also. TallyPrime server for the users who are having multiple users, maybe 6, 8, 10, and उनको Tally slow चल रहा है, और वो जब Tally slow चलता है तो उनकी productivity loss हो जाती है. So they have implemented TallyPrime server, and in case they have implemented TallyPrime server, would that TallyPrime edit log version work in that? Yes, it will work for both the products, TallyPrime as well as TallyPrime server. Many users make customizations, and in those customizations, users are updating it कि okay, क्या कुछ fields update करते हैं, कभी broker का नाम है, कभी whatever it is, masters create करते हैं. So will edit log be activate for those customized fields also? Yes, it will be available for those customized fields also. Okay, Q&A, the way forward. Friends, before the start of the session, or rather on the start of the session, I had asked few questions, and I'm sure the question helped us to enlighten us or to ensure to help us to remove some of the doubts that we may have. Accordingly, I have also devised few questions for normal TallyPrime, not related to edit log, and those are available on the community.
it is a, I mean, we had a discussion with Tally Solutions that users should be knowing more and more features of TallyPrime. Okay, and in that, with that perspective, I had devised some questions, and I am happy to share that Tally company accepted, and they have provided those questions on the Tally site itself, Tally Solutions site itself. Would recommend each of you to go on that portal, community.tallysolutions.com and /quiz. Please go on that portal and check out that. It would help, in my view, it would help you in knowing more about TallyPrime. Okay, क्या features है, क्या नहीं है, because in a survey which was done, many of the users are using only 30 to 40% of the software. And if you are not using major part of the software, definitely you are missing on your productivity, definitely you are missing on your efficiency. So with that regard, this question answers are made. You can please go and check it out on the Tally site. Filal, from my side, because I am currently late. So from my side, that is all. And one thing which is pending, how to use TallyPrime edit log in a normal TallyPrime. So अगर वो दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ, but I would leave it for the organizers to first say something. Then फिर अगर लास्ट में बताना है या फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं. Yeah. थैंक यू पुनीत भाई. जिनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है वो लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जिनको थोड़ा सा और जानना है या कोई क्वेश्चंस है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो. इट्स नाउ इनफॉर्मल चैट जैसी चीज अभी अब स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले मैं सिर्फ एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा पुनीत भाई को कि उन्होंने इतने सारे इनसाइट्स जो है हमारे साथ शेयर किए ऑन दिस जैसे फोरम. थैंक यू वेरी मच पुनीत भाई. At short notice. At a very short notice. Yes. Yes, sir. Yes, thank you Puneet bhai, and thank you all participants for your wonderful participation. अब जिनको questions है, जिनको कोई question पूछना है, तो I hope कि पुनीत भाई can spare a few minutes with us. Yeah, very much, sir. मैं ऑफिस में आ गया हूँ, so I don't mind spending next 30 minutes also or more in case it is required. I'm there available. I'm sure काफी सारे users अपने ऑफिस नहीं पहुंचे होंगे 8:30 बजे से. They have been there in front of mobile or laptop. So this is a challenge. काफी लोगों का नाश्ता भी बचा है अभी करना. बाकी है. नाश्ता भी बाकी है. It is a challenge for all of us. But yes, I would take it from this. Any questions? एक मेरा क्वेश्चन ये था पुनीत भाई कि अगर फिर अभी ये जमाना निकल गया है क्या कि हम क्लाइंट का डाटा अपने ऑफिस में मंगाए और वहां पे काम करके वापस भेज दें because of the audit trail concept? उसमें कोई चैलेंज है? मैंने जैसे बताया था TallyPrime edit log में I have not seen IP address or that to be recorded. मैंने वो देखा नहीं है. तो इसका ऑडिट ट्रेल जो है वो कंपनी फोल्डर में रिकॉर्ड होता है या अलग कहीं पे हो जाता है? है डेटा फोल्डर में ही रिकॉर्ड होता है, बट who, when and what. So while it is आपके पास डेटा पूरा आ जाता है 2021, 22 या 23, 24 का आपके पास डेटा आया, उसके पास एडिट लॉग है, आपके पास भी एडिट लॉग है. So there is no migration which is happening from the Tally software to another Tally software. Right. आपका ऑडिटर का लॉगिन इफ यू हैव यूज्ड इट, ओके, अगर आप जब ऑडिटर का लॉगिन यूज करते हो तो इट विल जस्ट रिकॉर्ड दैट आपने ये लॉगिन महावीर लॉगिन से ट्रांजैक्शन के अंदर अल्टरेशन किया था, बट इट विल नॉट रिकॉर्ड दैट वेयर दैट अल्टरेशन हैड हैपेंड. वो आईपी एड्रेस आपका अभी फिलहाल मैंने देखा नहीं है. मे बी इट इज देयर समवेयर इन द बैकग्राउंड ऑफ टेली, आई एम नॉट श्योर, बट अभी फिलहाल मैंने देखा नहीं है कि आईपी एड्रेस भी ट्रैक करता है. सो आपके मशीन में हो रहा है ये आपको नहीं मालूम है, या आपके लाइसेंस से हो रहा है या आपको नहीं मालूम है, या टेली को भी नहीं मालूम है. एंड द सेम टेली डेटा कैन गो देयर एट दैट. ओके, व्हाइल इट विल ट्रैक ओनली द लॉगिन हु, जो आप लॉगिन यूज करेंगे. जैसे मेरे केस में मैंने ए लॉगिन यूज किया. अब वो ए मैं हूं, महावीर भाई हैं या संतोष भाई हैं, नोबडी नोज. राइट. और इसमें पर्टिकुलरली आपने जैसे बताया कि माइग्रेशन के केस में कंट्रोल अल्ट एम जो अपन करते थे रादर पहले इसमें, तो उसमें माइग्रेट होता था और कंट्रोल अल्ट आर से रीराइट होता था. तो ये दोनों चीजें अब आ जाएंगी इसमें. यस, माइग्रेशन व्हेन द माइग्रेशन हैड हैपेंड एंड इन केस रिपेयर किया है डेटा को, तो एक एक वाउचर में अगर वो रिपेयर हुआ है, रिपेयर के कारण कुछ मॉडिफाई हुआ है, तो उसका भी स्टेटस उसमें आ जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन रिपेयर के कारण मॉडिफाई हुआ है.
Yes. थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में। नो प्रणव भाई, अगर ऑडिटर लॉगिन में व्यू प्रिंट परमिशन है तो वो नहीं आएगा, बिकॉज वो एडिट ही नहीं हुआ है ना, सो इट विल नॉट ट्रैक द ट्रांजेक्शन विच इज व्यूड बाय द ऑडिटर। ऐसा मैंने देखा नहीं है। आई एम श्योर देखने में इट कोई इज नॉट, प्रॉब्लम नहीं है। देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes. और किसी का कोई क्वेश्चन? और भी अगर कुछ आपके इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग टैली इन जनरल आल्सो, पुनीत भाई इज काइंड इनफ, he has in past helped us on numerous occasions। कोई भी आपका टैली के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज यू कैन कांटेक्ट विद जेसीएफ पुणे, और यू कैन कांटेक्ट पुनीत भाई डायरेक्टली आल्सो। राइट। पुनीत भाई, यस, जस्ट एक पूछना था, जो कस्टमाइज अगर समझो कुछ किया हो तो उसमें ये जो अभी ऑडिट ट्रेल का मैटर है वो भी सब कवर हो जाएगा? यस। सो कस्टमाइज जब हम करते हैं तब कुछ फील्ड्स हम क्रिएट करते हैं या प्रिंट का ऑप्शंस रहता है जो हम प्रिंट करते हैं। तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने कोई कस्टमाइजेशन करवाया है या किया है फॉर सर्टेन फील्ड्स, कोई फील्ड इन्वेंट्री में ऐड की है या मास्टर्स में ऐड की है, तो वो फील्ड का भी ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेली प्राइम एडिट लॉग में वो एनेबल्ड है, और वो भी आपके यहाँ पे रहेगा कि वो फील्ड में कितनी बार मॉडिफाई हुआ, कब मॉडिफाई हुआ, वो भी ऑटोमेटिकली रहता है। सिस्टम इज मेड रोबस्ट विद दैट रेस्पेक्ट आल्सो। ये कितना डाटा कंज्यूम करता है ऑडिट ट्रेल? डिपेंड्स, स्पेस आपने कितना कितनी कंज्यूम बार करता है? मॉडिफाई, आपने कितनी बार मॉडिफाई किया है वो उसके हाँ ऊपर डिपेंड करता हाँ, है। लेकिन एक ये रहेगा ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में वो जो टैली का जो फाइल है वो इतना बल्कि हो जाए कि वो फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाए या सर ऑपरेट होना। बराबर है, बल्कि तो होता है, थोड़ा बल्कि होगा, बिकॉज पहले आपका एक बीट बार ट्रांजेक्शन मॉडिफिकेशन टैली ट्रैक नहीं कर रहा था, बट नाउ एमसीए हैज आस्क्ड इट टू ट्रैक इट। तो जो ट्रांजेक्शन साइज है दैट इज इंक्रीजिंग बाय 20 to 30% एटलीस्ट। और इन सम सिनेरियोज, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक वाउचर 2 या 3 बार मॉडिफाई हुआ होगा, बट देयर आर प्लेसेस वेयर द वाउचर इज गेटिंग एडिटेड 10 टाइम्स और 15 टाइम्स, और टैली को वो 15 बार वो ट्रैक रखना है। बट ऑब्वियसली उनके केस में जो डेटा साइज है अभी 100 MB का है, तो वो सीधा जंप होएगा 150 या 180 MB का, अगर वो 10 बार मॉडिफाई हो रहा है ट्रांजेक्शन को। सो इट इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव। आपके ट्रांजेक्शन अगर 50 ही है और वो 10 बार मॉडिफाई कर रहा है तो आपका खाली 10 MB ट्रांजेक्शन होएगा, मे बी, आई एम जस्ट सेइंग। बट आपके 5000 ट्रांजेक्शन है, 50,000 ट्रांजेक्शन है, और वो 50,000 ट्रांजेक्शन 25 बार मॉडिफाई हो रहे हैं हर एक ट्रांजेक्शन, तो उस हिसाब से डेटा आपका साइज रहेगा। सो देयर इज नो बॉल पॉइंट फिगर कि कितना स्पेस चाहिए। आई विल टेल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज that at least 60% of the hard disk should be reserved, or 40% or 50% of the hard disk should be reserved for Tally's data। कि वो है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उतने जीबी में डेटा जाएगा, बट ऑन अ बॉल पॉइंट फिगर आई हैव सीन दैट जो यूजर ने 20 या 30% ऑफ द हार्ड डिस्क है, मे बी वो 100 GB का हार्ड डिस्क है, 200 GB का हार्ड डिस्क है, बट बोला कि यार टैली में डेटा ज्यादा नहीं है तो मैंने 20% ही रिजर्व रखा है एंड बैलेंस 80% यूज कर दिया है। In that case, we have seen Tally getting slowed. In that case, Tally में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। So 50% हार्ड डिस्क आपका फ्री हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। That is something that we are observing and advising also. एक बार हमें सर टैली प्राइम सर्वर जो है, बिकॉज ऑफ द नेम सर्वर ना, लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि सर्वर तो है हमारे पास, हम तो सर्वर ही यूज करते हैं, लेकिन टैली प्राइम सर्वर ये जो अलग प्रोडक्ट बोल के आपने लाया है फॉर हेवी ड्यूटी वर्क, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। Sure. So users for last 7-8 years को जो ग्रो कर रहे हैं, 7 users, 8 users, 10 users and more than that in one company, जब वो ग्रो कर रहे हैं उनको एक प्रोडक्टिविटी चैलेंज आ रहा था कि मैं जब भी एंटर कर रहा हूं तो साथ में अगर दूसरे यूजर ने भी एंटर उसी टाइम पर कर दिया, मे बी एट द नंबर फील्ड या सेव करते वक्त वाउचर, तो टैली थोड़ा सा हैंग होता है, गोल गोल मोड में जा, आई मीन राउंड राउंड मोड में जाता है। तो उस केस में क्या करना है? अब जो टैली पहले से बना हुआ है ERP9 या प्राइम, दैट इज मेड फॉर अ सिंगल विंडो आर्किटेक्चर, वो सिंगल डेटा आर्किटेक्चर के लिए बना हुआ है, जहां पे आप ये समझ सकते हैं कि एक दरवाजे के लिए बना है। अगर आप लोग 5 लोग या 10 लोग एक कैबिन में बैठे हैं और एक ही दरवाजा है, तो एक जन जाएगा एक जन आएगा। तो टैली जो बना हुआ है वो एक ही जन को रिस्पॉन्ड करने के लिए बना हुआ है इन एन
अर्लियर एनवायरनमेंट। अभी क्योंकि यूजर्स बढ़ गए हैं एंड यूजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। महावीर भाई सपोज सेल्स रजिस्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, संतोष भाई GSTR1 एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड somebody is doing a bank reconciliation, तीनों हैवी ड्यूटी वर्किंग कर रहे हैं, एंड somebody is importing। तो चारों जन टैली को डेटा एक्सेस कर रहे हैं, एंड इन दैट टैली हैज टू रिस्पॉन्ड टू ऑल द फोर। इन द ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट इट वाज गिविंग वन बाय वन। तो समटाइम्स यू फेल्ट दैट मेरे को 3 मिनट बाद में रिस्पॉन्ड आ रहा है, समटाइम्स यू फेल्ट मेरे को 10 मिनट बाद में रिस्पॉन्ड आ रहा है। इट वाज बिकॉज देयर वर 2 or 3 यूजर्स अहेड ऑफ यू इन द क्यू। आपके पास क्यू में वो 2 या 3 यूजर्स थे। नाउ विद सर्वर 9 what happens that each and every person get its own queue। मतलब किसी को भी वेट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके अपने वर्क के हिसाब से। महावीर भाई को 3 मिनट लगता है एक सिंगल यूजर में GSTR1 को एक्सपोर्ट करने में, तो शायद 3 मिनट ही लगेगा। दे विल नॉट गेट टू 10 मिनट्स। सर्वर का फायदा हुआ है कि वो 10 मिनट नहीं होगा, वो 3 मिनट लगता है, 3 मिनट ही लगेगा। एंड अगर आप दूसरे किसी को इंपोर्ट करने में 5 मिनट लगता है तो वो 5 मिनट ही लगेगा। बट एवरीवन विल वर्क ऑन देयर ओन स्पीड विदाउट हैविंग वेटिंग to work for the other person to get completed. So it is a productivity and efficiency enhancing server which they have brought in. It is a backend server. It is not a front end। front end में tally ही रहेगा, backend में ये multiple दरवाजे खोल देता है tally सॉफ्टवेयर का, इसीलिए उसको सर्वर का नाम दिया है कि वो सर्वर मोड में है। प्लस उसमें शेयरिंग बंद कर दिया है। नॉर्मल टेली एनवायरनमेंट में आप डेटा कॉपी पेस्ट सर्वर में, मतलब कहीं पे भी जाके डेटा कॉपी पेस्ट करके आप लेके जा सकते थे, तो इसमें शेयरिंग कंप्लीटली बंद किया है। सो इन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव दे हैव एनहांस्ड, बट इन माय व्यू इफ यू हैव टू परचेज इट ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। मतलब आप 5 लोग 7 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सकती है। प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सकती है। यस। How much it cost? Tally server. How much it cost? Tally server. टैली सर्वर का कॉस्ट है 2,70,000। टैली सर्वर का कॉस्ट है 2,70,000। हेतल भाई, हेतल जी, ओके, इनके पास हेतल जी, ओके, इनके पास। हाँ, यस, प्लीज गो अहेड। हेतल जी, you want to ask any question? Yeah, if edit log is disabled, then would it be tracked in edit log feature? Yes. In TallyPrime? Yes. Edit log cannot be disabled in. Edit log cannot be disabled in. Edit log cannot be disabled in the TallyPrime. Disabled in the Tally. Okay, but if you have migrated the data from TallyPrime edit log to TallyPrime normal, so उसमें आपका recording आ जाएगा कि this data has been migrated to TallyPrime normal. ओके, एंड जब आप TallyPrime नॉर्मल से फिर से TallyPrime एडिट लॉग में आते हो तो उसमें आ जाएगा, while edit log itself cannot be disabled at all. So my query was that if for April month the company has used TallyPrime and they had activated edit log from 1st April, and it was if they would have disabled, then it would have been tracked in the edit log mode, correct? If they have started with TallyPrime edit log started 1st of April, edit log. No, Tally. किसके 2 डिवाइसेस है क्या साइमल्टेनियसली चल रहे हैं? 2 डिवाइसेस है क्या साइमल्टेनियसली चल रहे हैं? No, they have started with the TallyPrime by activating edit log. They are not shifted to edit log mode for April month. They have now shifted. They have shifted from May, but for April they had used TallyPrime. So that would get recorded that for the month of April, the audit trail available. Okay. You may have to report as per your judgment. That the trail of the trail of the records of the trail is not available. Thank you, sir. Yeah. चलो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी ने YouTube ऑन किया हुआ है साइमल्टेनियसली या 2 डिवाइसेस से लॉगिन किया हुआ है? पुनीत भाई, एक क्वेश्चन पूछना था प्लीज। अब हर साल के लिए आपको अलग अलग टैली के जो है अपने फाइल्स वो बनाना रिकमेंडेड, इट इज रिकमेंडेटरी? नॉट रिकमेंडेटरी बट इट इज गुड ना, मतलब आप स्प्लिट कर दो डेटा को ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
क्योंकि हमारा तो बरसों से एक ही टैली का फाइल चल रहा था, तो अभी वो शायद चेंज करने के दिन आ गए होंगे। Not डिपेंड recommended. सर, अभी मैंने एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया था, 25 साल का डाटा हमको अलग अलग साल में था, वो हमने मर्ज करवाया है Okay. टू गेट बेटर एक्सेस कि क्या हो रहा है पीछे के साल में। अगर ट्रैक करना है तो कुछ समझ में नहीं आता है। So while it is required, I understand कि अपने को टेली प्राइम और नॉर्मल मतलब जो हम लोग को हर एक साल का डेटा हमको चाहिए रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी क्या है, ये एडिट लॉग है, आप पुराने डेटा में जाके किसी ने मॉडिफाई कर दिया, अपडेटेड कर दिया, आपने अकाउंट्स ऑडिट किया होगा 3 साल पहले, और उस वक्त अगर प्रॉब्लम मतलब जो ट्रेल है वैसा का वैसा ही रखना जरूरी है। आप 3 साल बाद में अगर कुछ मॉडिफाई हुआ है तो इट इज अ बिग रिस्क ना। सो टू answer those risks, if you are able to manage it, otherwise that's great. So in my thing, what I am doing it personally, I mean, I don't know whether it is right or wrong, I always get it audited in a separate books of accounts. मैं ये कंपनी को स्प्लिट कर देता हूँ, उसको सेपरेट एक कंपनी रखा हुआ है और उसी को कंटिन्यू रखता हूँ। एवरी ईयर स्प्लिट करता हूँ उसको, उसके अंदर पूरा ऑडिट कंप्लीट करता हूँ, एंड वो ऑडिट कंप्लीट करके उसका एक डेटा सेपरेट ही रखता हूँ। सो माय रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कंटिन्यूड, and I ensure that there is no change right from the opening balance to the final balance sheet signing. There is no change in the regular books of accounts. So regular books of accounts, once they have completed, उसका ऑडिट कंप्लीट हुआ है या ऑडिट कंप्लीट करने के पहले ही स्प्लिट कर देता हूँ, एंड देन आई गेट इट मैच्ड वैसा। तो अगर किसी को अथॉरिटीज को रिकॉर्ड चाहिए तो उस दरमियान का उस साल का ही रिकॉर्ड में दे दूंगा उनको। दिस आई एम गेटिंग इट डन। गुड आइडिया, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच पुनीत भाई सर, प्लेजर। जो भी लास्ट मोमेंट तक। हाँ, एक रिक्वेस्ट था आपको और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को भी। 27th of May, you might have known that it is a foundation day of our Jain Chartered Accountant Federation, and ये एक बहुत बड़ा इवेंट we are planning, and I'm sure last year May में आपने treasure hunt, blood donation and multiple activities किया था। In the month of May, would recommend आप लोगों के एंड पर से भी और कोई एक्टिविटीज और हो सके तो would be great, but Foundation Day this time we are planning to have for at least 1,500 chartered accountants, and it would be a great pleasure that Pune से अगर टीम यहीं पे बॉम्बे में आ जाए on 27th of May and do this particular, मतलब साथ में हम लोग फाउंडेशन डे मनाए, and it would be a great pleasure for that sir। वो अगर पॉसिबल होता है तो देखिए कैसे प्लान आउट होता है, द डिटेल्स एंड एवरीथिंग आर गेटिंग मैप्ड, मैं आपको शेयर करता हूँ, बट इन केस इफ इट इज पॉसिबल जस्ट ब्लॉक योर डेट so that further plans can be made। 27th फोर्थ सैटरडे आ रहा है ना? Yes, Saturday आ रहा है। Okay, certainly। It is from 2 p.m. to 10 p.m. With musical extravaganza, with award nights, and with capital market programs, with India Shining, or rather India Development Program। So कम से कम 4 से 5 एजेंडा लिया है इसको। तो इस केस में एंड वी आर प्लानिंग एटलीस्ट 1,500 चार्टर्ड अकाउंटेंट, खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट सम्मिलित होने चाहिए along with their family, maybe in the musical extravaganza, because the capacity calls for around 3,000 theater type sitting। ओके, इसका डिटेलिंग आप अगर शेयर कर सको, आज 3 तारीख है, 27 तारीख को, तो वी हैव सफिशिएंट टाइम ऑन हैंड, सो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द डिटेल्स to our members and get maximum participation possible। Yes। कहाँ पे रखा है लेकिन? कहाँ पे है? बोरीवली में है, बोरीवली वेस्ट में रखा है। Okay। Yes। बोरीवली वेस्ट में नियर लिंक रोड, ऑन द लिंक रोड, ये वहां पे रखा है सर। श्योरली आप डिटेल्स शेयर कीजिए, देखते हैं। नो इश्यूज। रात को 10 बजे तक वेडनेसडे मैं आ रहा हूँ पूना फॉर सम रीजन। एनीवन अगर मैं मिल सकूं तो इट वुड बी ग्रेट। संतोष भाई, महावीर भाई, मोस्ट वेलकम भाई, जरूर मिलेंगे, ये तो कहने की बात नहीं है। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट वेडनेसडे कुछ सोशल प्रोग्राम है, तो मे बी सम टाइम इन द आफ्टरनून इफ पॉसिबल, मैं कॉल करके डिस्कस करता हूँ सर। प्लीज मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सुबह जल्दी आने वाले हो तो हमारी फिजिकल मीटिंग जो होगी उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो। लेट मी चेक, अगर पॉसिबल हुआ तो वुड डेफिनेटली ऐड अप, मैं देखता हूँ। Certainly, yes। I failed to acknowledge, but आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ऋषभ भाई, can you
switch on your video. Because checklist is something that we all require, and आपने बहुत अच्छा software बनाया. I failed to acknowledge at the start of the session, but something which is required for all the chartered accountants. Rishabh bhai, I think he's not there. चलिए breakfast कर रहा है. Right. Okay, चलो see you. Yes, Punit sir. bhai. Sure, sir. चलो Thank see you Santosh bhai. See Yeah, you all. see you. Rishabh Yeah. bhai, Amit ji, Yeah. Rishabh.